Recording in progress. Okay, so hello guys, welcome to the second episode of our podcast. Today, as our guest, we have Rotaract Ojas Kamat and Rtr.Keyur Sabnis. Hello guys. Hello. Hi, thank you for having us. So let's just straight away jump to the start of our episode. So for our viewers, both of them are in third year right now. और कोई भी ऐसे थर्ड ईयर में जस्ट एंट्री किया हुआ पर्सन होगा, मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है, how are clinical subjects treating you? Third year is chill, I think, comparatively, as compared to, I think, the second year. And first year is the hardest, I think. Because Yeah. you don't know, you are just like in medical college and you are like, bro, what's happening? The medical virgins. Yeah, exactly. So you are just like, what's happening? I don't know what's happening. Then second year, you know what's happening, but too much is happening. Third year, you are like, okay, fine. Now it's like I know how to deal with stuff and everything. And this year we don't have. I think we only have like 2 subjects or maybe 4. I But have they no reduced the 2 subjects for you. idea. It's like once they send a circular, it's 2 subjects. Then they send it, it's like 4 subjects. Even they don't know how many. So They're confused. yeah, so it's fine. I think it's nice. No, third year is What not about that you, great Jeff? for me. They've started out with the worst subjects that I have ever faced. That is Oftal and FMT for me. And PSM is very shit. I don't know how to study that thick park, and I don't have any other alternatives for it either. But Oftal is really bad. So we don't have any choice about the attendance and etc. And it's a big issue. So I'm struggling right now. And plus, I'm in the symposium, so studies But have gone out. You have like what 250 students na, in your batch. 100. We have only 100. Yeah. Then it's like The worst part, like, everyone is under focus. Yeah. Even we have 100. But see, I've never heard of anyone like stay back because of attendance, to be honest. So Last year, like, do फिर they भी यार actually? मतलब उतना सा रिस्पेक्ट तो रखना चाहिए कि भाई अटेंडेंस तो 75% मैच हो जाए. बट नहीं, हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर विदाउट किया था. नाइस भाई, हैपनिंग कॉलेज है तुम लोगों का. हम लोगों के कॉलेज में तो नहीं होता है ये सब. हम लोग कॉलेज में सर्वर भी नहीं बुलाते, कुछ नहीं होता. सर्वर कुछ भी नहीं करते. बस ऐसे चलता है. मतलब हम लोग का ऐसे फेस्ट वेस्ट भी ओकेश है, हैपनिंग नहीं है इतना. इंट्रा ही है हम लोग का फेस्ट. ऐसे इंटर नाम के लिए बोलते होता है, इंट्रा ही है. हमारे यहाँ पे भी हमारे स्पोर्ट्स तो आई डोंट नो, लाइक आई डोंट थिंक एवर द स्पोर्ट्स हैव गॉन आउटसाइड द कॉलेज. इट्स ऑलवेज इन द कॉलेज हैपनिंग, नेवर आउटसाइड. वेरी सैड, बट इट्स ओके. ज्यादा कॉलेज. How was rcmedicrew for you this year? Like, it was always something new for me when we started. It was not like I was wanting like something other than studies I wanted to do, and this is something that gave me an opportunity. अच्छा लगा being a part of it. And एक तो मतलब one thing best about Ojas was like the parties that he had planned. I was not present for many of the events that any venue has done, but I think one of the one that we did in like next to Hex कौन सा club था हमारा? I think Metro गए थे, किधर तो गए थे. नहीं Metro तो अभी हुआ था. वो तो भाई मतलब I'll talk about that later. But the other one, the previous one, like the foundation में हुआ था ना. अच्छा, that no, this Bombay cocktail bar वाला. हाँ, that one. It was a very fun thing, and मतलब when I got to know कि भाई Ojas has organized, and I had I think there's another Ojas in RC. And I thought he had organized. I don't know he's there. Abhi, he was there last year. He was in the last term. Actually, I had met him, so I knew him like that. So I thought he has organized. But then I got to know this guy, and he's like that jolly kind of person. He doesn't know my name, still he'll come and interact with me. Like, "Arey, you like this," and like that experience went to another level. And like this time RC ka term is a very good one. And then slowly the activities, like the time goes by, people थोड़ा कम involved होते हैं in activities. अभी जैसे by the end of the year, बहुत अभी कल मेरा एक broadcast था, उसमें बहुत कम audience आता है. So by the time the audience starts dropping, and then it's happening. It's a good experience that anyone should get. Like, RC में एक बार तो लेना ही चाहिए भाई. As a BOD, as a VP, whatever possible. Some position you must be in some position. I think of RC नहीं, I would say RC तो है ही. RC is the best, but और भी कोई organization है, because you learn a lot, I think. And yeah, you were speaking वो club service, of course my director like Maitri, उसने वो बहुत like crazy events, मतलब of course we do it together, but it's like 80% और बहुत सही events. So this freshers also we planned now. Freshers is like ये first years के लिए हमने plan किया था, ठीक है. It was like a party वहाँ पे Bombay cocktail bar, and तो वो लोगों को लाइक वो क्लब बंद करना पड़ा, ठीक है. 400 लोग आ गए थे और ग्रुप ऐसे वो ज्वाइन कर रहे हैं. हमने वो लिस्ट वाला थी, हमें लगा 15-20 लोग नाम डालेंगे. बट नॉर्मली ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर बिजी, ये वो तो नहीं होते, इतना भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, स्पेशली फॉर दीज फिजिकल इवेंट्स, राइट. क्लब सर्विस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया. तो इवेंट इज इंक्लूडेड, तो ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाता है, बट नॉर्मली लेस देन 50 पीपल वी गेट, मतलब अप्रॉक्स 50 पीपल या कुछ. इसमें हमने लिस्ट डाला और 400 लोगों ने वो भर दिया फॉर्म.
सब ऐसा ये हो गया, क्या हो रहा है, इतना वायरल कैसे हो गया ये इवेंट. देन वी रियलाइज कि सबको लगा इज द फ्रेशर्स दे हैव. सबको पता था फ्रेशर्स होने वाला है, बट दे डिडंट नो कि जस्ट रहते बच्चे कि कॉलेज करेगा कि ऐसे ही होता है, तो उनको लगा यही फ्रेशर्स है. सो 400 पीपल जॉइंड ये वो. एंड देन हम लोगों का लाइक एकदम हमको ये भी लेना था कुछ उनसे, लाइक जो क्लब का कुछ पेमेंट में एंट्री फीस है वो. सो हम लोग के लाइक वो यूपीआई क्रैश, तो पे ही नहीं कर सकते, मतलब क्रेजी. फिर उनको क्लब बंद करना पड़ा. देन उसके बाद सो माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स राइट. So I went on this trip, मतलब जहाँ पे बाकी भी डॉक्टर्स थे, and their children were in I think first year ये वो. So they didn't know me by my face or something, but ऐसे introduce कर रहे थे. I said मैं ओजस हूँ. Oh you are Ojas Kamat, we came for your party. और नहीं random 2-3 बच्चे 2-3 बच्चे थे. They were like oh you are Ojas, we came for your party. This freshers ये वो. Damn यार क्या viral हुआ था event. I think 2 and 1 people came for that event, मतलब freshers. बहुत मतलब that was a very grand event. and उधर वो जो I think क्या बोलते हैं बाउंसर्स भी थे. अरे आपके कितने लोग आने वाले हैं? I'm like देखते I'm not sure because he had I think 6 pages का list when I came. Yeah, And he's yeah, opening and like what is your name? Oh God, where is क्या? Like ना That was उनका crazy. हो गया ये था. तो alphabetical भी नहीं है. हाँ ना alphabetically randomly you had to sit and search for the 6 lists and Yeah, where is yeah, fun right. by that night. And then we had Mitro was like full to other level dancing वगैरह Yeah, because BCB में क्या था we didn't know each other very well. There were a lot of yeah, people who came with plus ones and so बहुत कम interactions थे. Mitro yeah, was totally RC and people we know like since 9 months. So it was yeah, like everyone interacting very nicely and it was like the dancers especially. I think we have a video on Garbi and it was like yeah. it was fun, yeah. So I Especially think basically now see a lot of times when we interact with other directors or something, we don't physically meet them, right? कुछ जो भी होता है, even if let's say collaborate with your avenue from PR or something, it's majority of stuff is just online. So there are very few occasions you speak to these people every day, but there are very few occasions where you meet them physically, right? So right. that was an event. So yeah, everyone could actually sit and talk, and that's why it was a good event. Yeah. RC is like very like commonly this is a very myth that everyone takes it for that USMLE thing that we want to crack and that's why we want to do RC. Like I don't think anyone should do that. It is not only about uplifting your CV, although that is the one way you lure more people into this, but it is more about enjoying that process. You holding positions is a different fact. Getting those badges, attending those events. I was the anchor also for the I think जो first event था ना inauguration वाला. Installation ceremony. Yeah, I was the anchor, so it was another experience for me. So these are like experiences you gain and something that is not always mentioned on your CV, but it is something in your the professional development. Yeah, something you remember, like something you have to like remember. You can tell people, oh, एक तो you can tell people, oh, I was this. They'll also say, oh, I came for this. मैंने ये किया था उसमें ये organization में. And secondly, you learn a lot. मतलब you learn management. You learn how to deal with different kind of people. A lot of times, you may do these events, things don't go your way. Then you learn how to improvise. All this. All these are like essential skills. मतलब you can learn them in college, school, anywhere. Yeah, school में you are just like what, like teacher tells you to do something, you do that. Even school में नहीं यार, student councils also I think most of them are under teachers because सब teachers के supervision में होता है. एक वो freedom, degree of freedom बहुत कम होता है. RC और ये organizations में ना, these are completely student organizations. तो degree of freedom होता है. You have like creative freedom, काम करने का थोड़ा freedom होता है. So that's good I think. That's like yeah. तुम्हारे events, तुम्हारा planning, सब कुछ तुम्हारा होता है. It's like all about Yeah. students. You don't have anyone bossing around. Sitting on your head ये वो थोड़ा होता है कि वो events करो ये वो like ऊपर से हाँ, let's say no, I president think VP necessary. VP directors that is fine. अभी एक hierarchy होनी चाहिए organization में for it to function, any organization for it to function. But other than that, अगर events करना it's completely yours. You have like a freedom कि जो करना you can do it. So that's like the most appealing thing I think. Yeah. Nice, boys, nice. Okay, my next question or like segue would be ki like to Keyur and Ojas ki why bioethics or why club service and sports? I mean, out of all the avenues, I guess Keyur would be now like will be going for a 2-year tenure in bioethics, and Ojas has already had a 2-year tenure in club service and sports as well. So like, what was the thing that made you feel कि like हाँ यार इसको और थोड़ा सा contribution देते हैं अपन अपने side से, और what was it that made you feel कि like इस avenue में जाते हैं? Anyone You want of to go first? You can go first. Okay, I'll go first. Okay, sure. So basically, in the first term, I was the PR and marketing director, right? So first, मतलब मेरे को था कि यार PR and marketing में I had an interest. I like talking to people all this, and मेरे को पहले भी मुझे था like slight experience. तो तो मैंने उसके लिए enroll किया था, and after that I learned actually क्या होता है PR and marketing में ये वो. मुझे वो पूरा everything I understood about it. MOUs कैसे sign होता है, क्या कैसे बनता है, क्या terms होता है, how to deal with different parties, how to deal with people, all this. But after that, I applied for VP. So I had an option also, like I could get the community service thing. Community service also I could get for VP, but I think I chose. मतलब end में I thought कि I'll just apply for sports and club service क्योंकि मुझे ऐसे थोड़े fun avenues चाहिए थे. Like I wanted to do my work of course, but I wanted to have fun also with it.
PR relatively, if you compare it to club service sports, थोड़ा कम fun avenue. It's a very formal avenue. मतलब MOU sign करो, लोगों से you need to talk formally. All this you can't just say अरे भेजना MOU क्या कर रहा है, अरे ये डाल देना अंदर, क्या उसमें क्या हुआ, अरे भाई सुनना, you can't do all that to be formal. It has to be a certain way. So of course, yeah. So I learned to deal with a lot of people. ये वो. Then club service sports, of course, the events are fun, but वो बंद करने में भी उतनी मेहनत लगती है. I think participating people don't understand कितनी मेहनत जाती है एक ट्रैक प्लान करने के पीछे या कुछ प्लान करने के पीछे. I still remember मेरा VP बनने के बाद like first ट्रैक था and कुछ तो someone fell कुछ तो हो गया मतलब वो एरिया में ना. तो we have to change the whole मतलब प्लान यहाँ से चलो मार्शल जा रहे हैं और वो सब. तो वो अभी चेंज करने में so many people they were like अबे सिर्फ कैंसिल कर दे और ये कर वो कर. I was like it's not so easy ऐसे ही कुछ कर देना. बहुत प्लानिंग लगता है कि इतना फूड होना चाहिए बस. We have to pay मतलब एग्जैक्ट अमाउंट लेते हैं like, जो पार्टिसिपेटिंग पीपल है. We have to pay उतना ही. तो of course there are financial restraints ये वो. So yeah, of course you learn a lot and PR में you learn like the core work. I think as a director you learn like the core work कि मतलब क्या करना है उस एवेन्यू में. It's like a specialty. And VP में I think you learn more about management, how to manage people, how to get work done from people. A lot of it I think. Yeah, here you can continue. I feel like I should start from my interview time. And I think Ojas was there in my Oh interviews. damn! I remember KUR का interview. Everyone was fighting, you know. KUR ने इतना अच्छा interview दिया, सब झगड़ रहे थे. मुझे KUR चाहिए, मुझे KUR चाहिए. VP झगड़ रहे थे एक दूसरे से. Crazy that was. The thing is, I came for the first interview and I like applied for 3 to 4 avenues. I think there was IS and there was bioethics, there was PR and there was one more. So I applied for 4 and the first interview was IS and I'm like, let's try, let's see what happens. And who's the VP for IS? I forgot. Haley. Sorry. Haley Sura. Haley, yes, Haley. Now Haley is the one who asked me my first question, as in if you want to organize some kind of exchange, so how would you do it? And I had no idea what she's talking about. What is एक उधर चलाएंगे, एक उधर भेजेंगे. And I was totally blank. I had not thought of what I'm going to say. I just knew my line. I'm KU Sabnis and I'm applying for this and I'm in this college and this is my third year, second year MBBS. I did not know anything else. And I'm just trying to figure out what to say. एक तो कैमरा भी चालू रहता है. You cannot like Google वगैरह कुछ करना. The worst part. And so I'm just thinking, हमने कुछ तो बकवास कर दी मैंने उसके सामने. And she's like, okay. Then Jessica is like, what new things would you like to give to this avenue? And I'm thinking. And मेरे को ऐसा लगा ठीक है एक ठोक देते हैं. I'm like, I have a lot of contacts and I would not be able to divulge them to you until I get the role. And Jessica is like, Thousand IQ. And then उसके बाद क्या था the most funny thing that happened. So Haley was noting these things down, all of these सबका interview का, and she noted everything and गलती से she sent it to the IS वाला interview वाला group. And उसपे सबको दिख गया कि क्या लिखा है. उसमें क्या लिखा था? KU Sabnis speaks well, claims to have contacts. Oh yeah. We had this thing, पता है, like a co-group में सबका एक पूरा PDF था, like every person who interviewed, we had कि इसका क्या अच्छा है क्या बुरा है, so other avenues can take them for their if they think he's good. It was so funny to read the claims to have contacts. Yeah. And I'm like, oh god. And then for first interview I understood, okay, this is how the interview works and what they want. थोड़ा आइडिया लगा. एक बेबी डिलीवर हुआ and मेरा प्रोजेक्ट चालू था तभी. So it was ops का प्रोजेक्ट था. तो तभी बेबी डिलीवर हुआ and the baby died because of the negligence of the doctor. But the doctor came and told the relatives कि ये पैदा ही dead हुआ है. So I asked him कि ऐसा क्यों? मतलब why are you lying to them? So he's like, आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप बहुत ज्यादा जाने बाद में बचाओगे. अगर आप if you try to lose this one and lose your license, you're going to cause like basically everything that way. So something triggered and I'm like, let's do something in this sort. I would like to explore this part more. And that is the reason I gave for my bioethics interview also. Everyone was very happy. कुछ तो personal reason है. There's some motive behind him joining bioethics. So that's how I got into bioethics. After that I got to know that people are fighting and etc. But that's how I got into bioethics. And like I applied for this thing like BOD because पहले देखना तो पड़ेगा काम क्या होता है, करना क्या होता है. And then becoming the VP was more about I want to learn how to get work done. Now Aishwarya knows I'm the leader for the Simpo and how difficult it is to coordinate between people without hurting feelings and without उनको irritate करने के इसमें. So I'm going to experiment here as well. Becoming the VP is more about my own development as a person. So that's why. It's a fun experience, yeah, working as a BOD, trust me. Yeah. I was taking a segue कि अभी पता चला मुझे कि your parents are also doctors and one of your parents KUR is also a doctor. तो कुछ ऐसे shared experiences, shared दुख, expectations, shared realities कुछ है. I mean, if you want to discuss about them, I'll like take what are the this struggles? first. Like the reason being, like Aishwarya knows, my mom is HOD anatomy and at MGM. So my first year was like totally into that section because she knew a lot of people in my college and like not only anatomy, like a lot of people. So these were like nepotism का बंदा है, इसकी मम्मी सब कुछ जानती है. And then apparently my anatomy was strong beforehand. I don't know how, but it was just strong. And मतलब मेरे पेपर बात कर करके हाँ
It was more about when my mom was pregnant, she was giving her MD exam. So she had studied the entire grades. Is this true? ये होता है क्या सच में? मैंने महाभारत वगैरह में पढ़ा है, पता है वो So अभिमन्यु को I shouldn't praise myself, but मेरे को पता है आप ऐसा anatomy में अभिमन्यु ऐसा करके एक हाथ बार बोला था इन्होंने. So my anatomy was strong पहले, and then writing papers and etc. I used to get like 80-85 तक जाता था anatomy. So these people were like इसको ना पेपर मिलता है. That's not strong, that's like genius. इसको पेपर मिलता है, इसको इसकी मम्मी पेपर अवेलेबल करा के देती है एग्जाम से पहले, और इसके लिए इतने मार्क्स आते हैं. मैं भी वही सोचता हूँ भाई 80-85 क्या होता है, मेरे को उसका हाफ भी नहीं आता था. And I'm like, यार मतलब I don't discuss anatomy also with my mom. Like घर पे आके it's like anatomy की बातें थोड़ी ना करेंगे भाई, कॉलेज में भी वही घर पे आके भी ऐसा नहीं. तो नहीं रही तुम लोगों को. And then dissection में भी like अरे आके बता दे कैसे करना है. So it was a lot of that environment कि ना nepotism का बंदा है, इसको सब कुछ पहले से पता है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. It was that. So yeah, so for me, my dad is a surgeon, my mom is a gynaec. So first of all, yeah, like बचपन से थोड़ा like exposure रहता है if your parents are doctors, right? कि let's speak on the phone, ये patient, वो patient, this that. You have like बचपन से, and it's your relatives यार. मतलब you are like what 4-5 years old to be पापा जैसे डॉक्टर ही. अरे यार मतलब थोड़ा पैदा तो होने दो अच्छे से, what मतलब इतना मतलब ठीक है, but end में like they didn't force me or anything. मेरे को ही था कि ठीक है मतलब मेरे को इंटरेस्ट है इसमें. वो आ जाता है, I think you know मतलब you inherit that feel कि I want to be ऐसा. हाँ मतलब ऐसा मे बी वो इंटरेस्ट में प्लांट किया गया होगा ओवर टाइम, लाइक मेरे सबकॉन्शियस में बोल के रिलेटेड, आई डोंट नो जो भी है, लाइक ठीक है बट इट वाज माय चॉइस ओनली. मतलब तो वो हाँ वो हो गया ऐसे. देन नीट वीट में भी ठीक आ गया, सो कॉलेज वॉलेज का भी वो सब. फिर उसके बाद या मतलब द थिंग इज कि मेरे साथ तो बहुत हुआ है मतलब कि मतलब सर्जरी वगैरह स्पेशली उसमें तो पूरा डिपार्टमेंट. सो आर एकेडमिक डीन, सो माय डैड वाज अ लेक्चरर और समथिंग मतलब इन हिज यंग डेज, एंड ही वाज लाइक अ रेसिडेंट. तो मेरा डैड उसको बहुत मतलब ये कर देते ऐसे कि डू दिस डू दैट. तो वैसे दे आर लाइक हाँ, तो वो एक था. देन बाकी भी लाइक सर्जरी डिपार्टमेंट का एचओडी और एवरीवन. एंड देन ऐसे ही हाँ मतलब हुआ है मेरे साथ लाइक काफी बार, लाइक आई गो समवेयर आई सी पीपल एंड माय डैड इंट्रोड्यूसेस मी ये वो. सो वो एक रहता है ऑफ कोर्स दैट एडवांटेज. कभी कभी तो भाई मतलब वो सामने से आके बोल देते हैं you are that person's son. I'm like yeah that has also happened to me. Yeah that also happens a lot. my But faculty in between of the lecture she's like you're Dr. Anjali's son, no? I'm like yeah, but you can go on with the lecture, you know? let's yeah, but can you like do your job? Yeah, don't get this into the highlight, like I don't want everyone to know as such, but okay. Yeah, but yeah मतलब I don't think मतलब for me personally it's never been like मतलब it doesn't get you for now at least. Maybe when you start your practice, I don't know, people say nepotism, but college में वगैरह I don't think you may get any special benefit ये वो, like if your parents are, it just doesn't matter. And in general also, if you, I think if you have merit and everything, even in your practice, I don't think like your parents being doctors and everything, of course you may have a little advantage, of course I'm not denying that, but if someone's really good, they'll of course outcompete you, they'll have a better practice. And if you are not a good doctor, your dad or your parents may be the best doctors in the world, but patients may not come to you, of course why would they? So yeah, I think in medical industry it's not that much matlab what people say nepotism and all this. That's what the skills that come into play later. Yeah it's your skills and it's your knowledge and everything. हम लोग का थ्योरी पेपर चालू है. She sat behind me, okay, and that I am the last batch. कॉपी करने का अर्ज तो आता है. She sat behind me and then she like this. she tried to catch me in that act, you know, अभी पकड़ा जाएगा and then I'll kill him and everything, but I made sure कि मैं चुपचाप बैठा हूँ. जितना आ रहा उतना लिखा, but लिखा. So that is how it happened. It was very bad. Nice. ये क्या करना चाहिए था? You also ऐसे पेपर लिखता, फिर ऐसे वो आई कांटेक्ट होता तो वो ऐसे बहुत ये हो जाता, फिर वो भी ऐसे एंजाइटी हो गई. वो पूरा टाइम मेरे को देखे जा रही है. हाँ वो होता है यार, दैट हैपेंस. अबे क्योंकि द थिंग इज कि कोई इन्विजिलेटर आ रहा है, वो तेरे पेपर में देख रहा है और तू कुछ भी लिख रहा है, ठीक है, तुझे पता है तू कुछ भी लिख रहा है, ऐसे भी कुछ भी लिख रहा है. तो इट्स लाइक रियली बहुत ऑकवर्ड होता है, लाइक आपको चेक करना ही है बाद में, तब कर लो ना, मतलब अभी लिखने दो मेरे को जरा, मतलब कुछ भी जो भी ऑकवर्डनेस यू गेट, यू नो, लाइक मैं रुक जाऊं, क्या करूं आप बाद में. हाँ भाई आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो, क्या आप व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, मतलब they start reading your paper, they start analyzing, you know, this is a good student or a bad. I'm like, get lost, you're gonna get my paper later. हाँ यार, और एक आंसर यार, और आगे पीछे मे बी देयर इज सम आंसर व्हिच आई नो, मे बी नहीं आता, बट मे बी देयर इज अ चांस. वो पढ़ लो ना, मतलब वो लिख रहा होगा, मैं आपको बुलाता हूँ तब पढ़ लो मेरा आंसर. मैं तो कभी-कभी जानबूझ के, मेरे को दिखता है ना कि ऐसा कोई जानबूझ के स्टेयर कर रहा है, मैं ना वो पलट देता हूँ जहां मैंने अच्छा आंसर लिखा, ये पढ़ो. हाँ मैम ये देखो एक ही है लिखा आता था, ठोकने वाला आंसर मत पढ़ो तुम लोग. I'm enjoying it too much. मैं अगले सवाल भूल गई मेरा. Anyways, like मेरा आगे सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि है क्या डिसाइडेड क्या करना है आगे? नहीं. हाँ मैं वही पूछता भी है तो I'm like no, मैं सिर्फ MBBS और फिर GP नहीं यार, अरे मतलब पता नहीं यार,
it's like अभी थर्ड ईयर में सब एक्सपोजर नहीं है प्रॉपर तो जब टाइम आएगा तब आई थिंक सब This is very true, मतलब like unless you know all your subjects well, you cannot decide. एग्जैक्टली यार ऐसे थोड़ी यार ये वो कर रहा है मैं भी वो करूंगा ऐसे थोड़ी होता है यार मतलब ऐसे नहीं चलता ना हाउ डू यू आई नो व्हाट यू अग्री लाइक फर्स्ट ईयर में क्या कि लाइक पहले तो एज ओजा सेड फिगर आउट कर रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है एंड देन सेकंड ईयर की हम थोड़ा सा फिगर आउट हो चुका था बट स्टिल और भी चीजें थी एंड ना थर्ड ईयर में एज पोस्टिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कुछ लोग होते हैं जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स भी ऑलरेडी पढ़ ले रहे हैं फॉर सम और अदर रीजंस और देन एट द सेम टाइम यू सी आजू बाजू में लोग एमएलए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सम आर ऑलरेडी सीरियस अबाउट व्हाट दे वांट टू डू और व्हाट स्ट्रीम दे वांट टू चूज सो इवन इफ यू आर नॉट लाइक थिंकिंग इन दैट एस्पेक्ट कि मेरे को अभी करना क्या है यू आर इवेंचुअली लाइक मेड टू थिंक अबाउट इट देलुलु में रहना इज लाइक ऑफ कोर्स वो तो सोल्यूशन है बट स्टिल यू आर कभी कभी हो जाता है सो आई एम जस्ट आस्किंग पीपल कि लाइक आर दे विद मी और लाइक आर दे द वन I'm right now working on that, differential diagnosis का होता है ना, एक एक करके उड़ाते हैं हम लोग, ये नहीं है, ये नहीं है। दैट इज लाइक वेरी फन पर उसमें सीन क्या होता है उसमें हर आंसर क्यों आता था कि सबने से भला नहीं पढ़ा एक्चुअली सेकंड ईयर में सबने सिर्फ भला नहीं पढ़ा तो एक तो मेरा बीच में ऐसे हो गया था यार मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग खेलते थे ये सब उसने से सीवीएस बोला मैंने रोमैटिक आर्ट डिसीज अभी तुझे कैसे पता चला भाई मेरे से सिस्टम बोला उतना ही बचा है अभी 5-6 टॉपिक्स आते हैं सिस्टम में उसका ही सबको वही आता है I don't think anyone opens skin like other than your commerce cell and basal cell कोई multiple कोई ये skin chapter खोलता ही नहीं है कोई bone chapter खोलेगा नहीं rarely वो ऐसे पढ़ते हैं except that osteosarcoma and वो सब मतलब दो तीन specific topics भाई so if you know the muscle वाला तो I system think autoimmune की bacterial हो गया उधर ही आ गया I know मैं तो I think right now जैसे जैसे postings हो रहे हैं ना one thing I'm realizing off साल तो करना नहीं है होगा ही नहीं मुझसे दूसरा I'm like right now losing my interest in surgery पहले बहुत था अभी थोड़ा कम होते जा रहा है थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार टफ होगा अरे वो आई हैव हर्ड कि रेसिडेंसी टफ होता है सर्जरी का लाइक मेरे को इंटरेस्ट है बट द रेसिडेंसी एंड एवरीथिंग आई हैव हर्ड कि मुझे साइकियाट्री बहुत सही लगता है I had an experience today I can speak with like to a psychiatrist you speak to so many like mentally ill people how do you know it doesn't affect it may affect you or like भाई कहीं मैं ना बैठ के उसको बोलने लगा कि भाई तू मेरी थेरेपी कर ले मैं पागल हो रहा हूं मेरे से नहीं हो रहा ये उसके बाद मुझे भी जाना पड़ेगा थोड़ा ओके तुम दोनों लोकलाइट्स हो राइट या हां तो चालू हो जाओ जस्ट रैंट इट आउट तुम हॉस्टलाइट हो चलो निकलो लोकलाइट हो चालू हो जाओ हॉस्टलाइट लोकलाइट ड्रिफ्ट इन कॉलेज का हां हर कॉलेज में स्ट्रांग ड्रिफ्ट और इज देयर एनी काइंड ऑफ कोऑपरेशन पहले अरे सीन क्या ना सो दीस न्यू चिल्ड्रन कम ना तो हम लोग के सीनियर बैच में बहुत था पहले अपेरेंटली तो उन्होंने बताया कि लोकलाइट से बात नहीं करते वो पर धीरे धीरे उनको पता चला हम भी अच्छे हैं तुम भी अच्छे हो मेरा तो कुछ सीन नहीं है भाई मैं देखता ही नहीं है सब उल्टा मेरे को ज्यादा कूल लगता है भाई ऑस्ट्रेलियाइट्स फॉर सम रीजन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गया मतलब आई थिंक इट वाज फाइन फॉर द फर्स्ट ईयर बट फिर वो बहुत एस्केलेट हो गया बट नहीं आई थिंक इट्स लाइक वो दो थाली के चट्टे पट्टे थे लाइक दे नेवर मर्ज इट्स लाइक ओनली इन अ सिचुएशन वेयर इट्स लाइक कॉलेज और इवेंट्स हो गए फेस्ट हो गया तो उसमें साथ में आते हैं बट वो मर्ज नहीं होता है अरे मतलब नाउ इट्स लाइक चिल मतलब पता नहीं और मे बी हम लोग का एक ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेज है ना सो लाइक सब लोग बहुत ऐसे सिमिलर लाइक बैकग्राउंड से मे बी दैट्स द रीजन कि हम लोग में मतलब नहीं होता इतना लाइक सब चिल होता है लाइक कॉलेज फेस्ट और इवेंट्स पे क्या मत है आप लोगों में कॉलेज फेस्ट कामत अपना मत बताएंगे यस ओके कॉलेज फेस्ट से ज्यादा मेरा कॉलेज इलेक्शन पे बहुत ओपिनियन है मतलब दैट जस्ट मुझे पता चला इलेक्शंस के बाद कि क्यों मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा उसके पहले मुझे था कि ब्रो मे बी बड़ा हो गया आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी ये वो इफ आई लाइक बिकम समथिंग मे बी आई ट्राई कोई तो कुछ तो करूंगा देन आई वाज लाइक नो नहीं मुझे मेरी लाइफ में शांति चाहिए इतना पॉलिटिक्स मतलब कुछ छोटे से छोटे पोजीशन के लिए भाई इतना पॉलिटिक्स दोस्तियां टूट रहे हैं लोग रो रहे हैं रोज झगड़े हो रहे हैं लोग क्या पोजीशंस के लिए पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ तो भाई खुलेआम पॉलिटिक्स चलता है इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर स्टूडेंट काउंसिल और एनीथिंग आपस में पॉलिटिक्स चलता है भाई हाँ अरे हम लोग में वो तो चलता है बट देन पीपल वर लाइक कि मुंह पे तो अच्छे से बात करते थे वो सब खत्म हो गया भाई इट वाज ऑल जंगल भाई ये काउंसिल के इलेक्शंस में मतलब कुछ भी चल रहा है दोस्तियां टूट रही तू किसे सपोर्ट कर रहा है फिर मुंह पे अच्छे से बात करते थे माय गॉड दैट लाइन इज लाइक सच अ हिटिंग लाइन तू मुंह पे अच्छे से बात करता था मैंने तो कुछ और सुना तेरे बारे में yeah medical college prepares you for the worst situations ये होगा मेरा टाइटल that is true actually भाई you learn about toxicity you learn about fake friends you learn about working with people you don't like Aishwarya what you are saying you don't like working with Aishwarya no झगड़े oh my god झगड़े ये देख Aishwarya मैं होता सह के नहीं लेता मतलब this is I'm talking about कलेश करवाना and etc it's very difficult and you learn a lot भाई
that amount of qualities you know about, you start सब पहचानना, लोगों को पहचानने लग जाते हो कि भाई ये बंदा सही है, ये गलत है. That is true. That is true. तुम लोग को वो होता है क्या? तुम लोग को एक हाँ ये करते हैं भाई बात, ये बहुत बड़ा इशू है पता है मेडिकल स्टूडेंट्स का, और कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता. तुम लोग को हर दूसरे डिसीज पढ़ के लगता है फक ये मुझे तो नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे इधर थोड़ा भी देखा यार कोरोनरी आर्टरी प्लेग तो नहीं है मेरे कोरोनरी आर्टरी पर. भाई ये होता है मेरे को. मेरे गॉलब्लैडर में सबके यहाँ स्टोन very common होता है. जिम में मैंने 100 किलो उठाया उसका दुख रहा है, बट नहीं मेरा राइट शोल्डर दुख रहा है, रिफोर्ड पेन तो नहीं हो रहा. शोल्डर डिस्टोर्शिया तो नहीं है मुझे, अलग सा फील हो रहा है, न्यूड सा लग रहा है. Yeah. No, this is something I commonly feel. Actual known order पता, it's a known disorder पता है देखो, psychiatry में illness anxiety disorder बोलते हैं उसको, कि मतलब you read something and you are like नहीं हुआ है कुछ, but you think मेरे को ये है, it's also medical student syndrome. अभी इंटरनेट अभी बहुत लोगों को होता है, पहले से मेडिकल स्टूडेंट्स को पता था ना ये डिसीज है, इंटरनेट नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में था, तो उसके लिए लाइक स्टूडेंट्स को मतलब सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को कुछ भी चीजों के बार-बार टेस्ट करा के आते थे. I think वो मतलब मेरे को भी सर I think क्या हुआ recently, something happened to me and I'm like पता नहीं यार कैंसर वैंसर हो गया होगा, पता नहीं क्या होगा, मेरा भविष्य आगे कौन बढ़ाएगा. This has happened to me also. I is like, you know, even a tendency, this is very specific for medical students because it's a tendency. You get to hear some symptoms, you think the worst that can happen. Yeah. Even in your exams. It's like, bhai, stomach pain, gastric cancer. You don't think about bahar ka hai, gastric cancer. So Yes. you reach to that ultimate diagnosis like, bhai, कुछ तो severe हुआ है, I'm going to die out of it. पता नहीं संपत्ति का क्या होगा. यही सब आता है दिमाग में. Skin पे itching हो रहा है यार, मुझे लगता है malignancy है. Okay, let's take a small segment on exams, no? MBBS exams. Exam. हाँ यार. Quick succession. What is your stand on examination in MBBS? I think examination एक चीज के लिए exist करता है कि मतलब उसके बाद जो enjoy, अभी कुछ enjoy करता है तो उसमें मजा है. मेरे मन की बात छीन ली तो एग्जाम बस एंजॉयमेंट के बीच का एक गैप होता है, लाइक यू हैव टू अब्सटेन फ्रॉम लाइक गोइंग आउट दैट, तो वो एक एग्जाम होता है, पूरा मजा है उसके बाद. नहीं तो पॉइंट ही नहीं है ना, रोज वही कर रहे हो, घर पे बैठे हो बस, कोई पढ़ता ही नहीं, एग्जाम नहीं होती तो. He just did this. Exams के बीच में enjoyment के बीच में exams. Yes, that is true. एग्जाम एंड में तो लोग यार वो 2-3 महीने ही होते हैं, वो 1-2 महीने होते हैं MUHS के पहले, बस उठ के बस पढ़ना होता है, तो उस वो उधर वो एग्जाम का मोटिवेशन वही होता है यार, वापस एंजॉय करना. So that's why you can. I think there is this something called as last exam syndrome. I'm not sure everyone has. Yeah. But you are like, अब हो गया, हम पूरा ऐसा एंड तक पहुंच गए, अब नहीं होगा इससे आगे, अब एंजॉय, इसके बाद पार्टी जाना है, विला में जाना, क्या करना है. भाई लोनावला जाएंगे, उसके बाद गोवा जाएंगे, तो अलीबाग जाएंगे, भाई 3 जगह जाते हैं सब लोग, लोनावला, गोवा और अलीबाग. Okay. Thank you so much, guys, for being the guest on this podcast. It's been a great having both of you. We had a lot of fun, and I guess our audience did too. And if you want to watch more such fun episodes, do keep a check on our YouTube channel. More such episodes will be coming. Stay tuned. Bye. Bye. Thank you for having us. Thank you for having us. Bye-bye. Good night. Bye.